Hello student, Jai Swaminarayan. Today we will study about the fundamentals of remote sensing. Definition: remote sensing is the science and art of obtaining the information about an object, area or phenomena through the analysis of the data obtained or acquired by a device that is not in contact with the object, area, phenomena under the investigation. That means कोई भी ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में आए बिना उसकी इंफॉर्मेशन चाहिए, ओके उसके रिलेटेड डेटा चाहिए, तो उसके लिए क्या यूज़ होता है? रिमोट सेंसिंग यूज़ होता है। रिमोट सेंसिंग इज द एक्वायरिंग ऑफ द डेटा अबाउट एन ऑब्जेक्ट विदाउट टचिंग इट। Another definition of the remote sensing is: remote sensing is the non-contact recording of information from the ultraviolet, visible, infrared, microwave regions of the electromagnetic spectrum by means of the instruments such as cameras, scanners, lasers, linear arrays, and area array located on platforms such as aircraft, spacecraft. Analysis of acquired information by means of visual and digital image processing. दैट मीन्स ये सब डेटा इंफॉर्मेशन कहाँ से मिलता है? तो किसके यूज़ से मिलता है? तो हम कैमरा, स्कैनर, लेज़र वो सब जो भी यूज़ करता है, जो भी इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ करते हैं वो कहाँ पे अटैच किया होता है? एयरक्राफ्ट और स्पेसक्राफ्ट में, ओके जिसमें अल्ट्रावायलेट अलग अलग टाइप्स के रेज होते हैं। वो जो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में जो रेज होते हैं वो अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स में अलग अलग होते हैं, ओके कई जगह पे पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम रेज कवर किया होता है, ओके दैट मीन्स वो जो भी रेज है वो ऑब्जेक्ट पे गिरेगा, वहाँ से ऑब्जेक्ट का सम अमाउंट ऑफ एनर्जी, जो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी है, ओके तो सम अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब, देन सम अमाउंट ऑफ एनर्जी स्कैटर्ड, सम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिफ्लेक्टेड, ओके तो जो भी है एयरक्राफ्ट और स्पेसक्राफ्ट वगैरह जो भी और सेंसर्स है तो वो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, ओके तो उस पे से आपको क्या मिलेगा? एक इमेज मिलेगा और वो इमेज मिलेगा उस पे से आप क्या जो भी डेटा आपको चाहिए वो मिल सकता है, ओके Concept of remote sensing: we perceive the surrounding world through our 5 senses. Some senses require the contact and our sense organs with the object. That means कई जगह पे हमें कांटेक्ट चाहिए, कांटेक्ट से ही पता चलता है कि उसका टेस्ट कैसा है, टच करने से पता चलता है कि फॉर एग्जांपल हम कोई भी चीज़ टच करते हैं तो पता चलता है कि ये चीज़ सॉफ्ट है, हार्ड है, रफ है, स्मूथ है, और कई चीज़ क्या है टेस्ट से पता चलता है। फॉर एग्जांपल फूड है, फूड का टेस्ट हमें चाहिए किस तरह का है, तीखा है, मीठा है, कौन सा टेस्ट है, तो वो कई सेंस ऑर्गन को उसका यूज़ कभी हो सकता है जब हम ऑब्जेक्ट को टच करते हैं, बट कई सेंस ऑर्गन्स होते हैं उसमें ऑब्जेक्ट को टच करने की ज़रूरत नहीं है। फॉर एग्जांपल हम जो सुनते हैं, जो भी देखते हैं उसमें टच करने की ज़रूरत नहीं है, ओके बिटवीन द सेंसिंग ऑर्गन एंड द एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट्स। जनरली रिमोट सेंसिंग रिफर्स टू द एक्टिविटीज़ ऑफ द रिकॉर्डिंग, ऑब्जर्विंग, perceiving, that means sensing the object or event at far away places। बहुत दूर ऑब्जेक्ट है तो उसके रिलेटेड कुछ भी डेटा चाहिए तो उसको रिकॉर्ड करना, ऑब्जर्व करना, सेंस करना, ओके वो सब रिमोट सेंसिंग में होता है। इन रिमोट सेंसिंग द सेंसर्स आर नॉट द डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द ऑब्जेक्ट बीइंग ऑब्जर्व्ड। रिमोट सेंसिंग में जो भी ऑब्जेक्ट है वो डायरेक्टली कॉन्टैक्ट जो भी सेंसर्स होता है और जो भी इंस्ट्रूमेंट्स होता है वो इंस्ट्रूमेंट्स जो भी होता है उसके साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं होता, ओके ऑब्जेक्ट जो भी है वो। द इंफॉर्मेशन नीड्स अ फिजिकल कैरियर टू ट्रैवल फ्रॉम ऑब्जेक्ट event to the sensor through an intervening medium.
The electromagnetic radiation is normally used as an information carrier. Electromagnetic radiation is normally used as an information carrier in remote sensing. तो कोई भी इंफॉर्मेशन है तो उसको ले जाने के लिए कैरियर चाहिए. ओके, तो कैरियर में क्या है, क्या इंफॉर्मेशन कैरियर कौन है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इज नॉर्मली यूज. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है वो क्या है? नॉर्मली यूज्ड एज एन इंफॉर्मेशन कैरियर इन रिमोट सेंसिंग. जो भी ऑब्जेक्ट की रिलेटेड इंफॉर्मेशन है उसको ले जाने, सेंसर तक ले जाने का काम क्या करता है? कौन करता है? कैरियर करता है. दैट इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन कैरियर. तो इंफॉर्मेशन कैरियर कौन है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो भी है वो यूज़ होता है इंफॉर्मेशन कैरियर. इंफॉर्मेशन कैरी करने के लिए यूज़ होता है. ओके, The technical term remote sensing was first used in the United States in the 1960s. The technical terms like encompass, photogrammetry, photo interpretation, photogeology are also were emerged with the remote sensing. Since the Landsat 1, the first Earth observation satellite, was launched in 1972, sensing has become widely used. Remote sensing occurs at a distance from the object or area of interest. Interestingly, there is no clear destination about this distance. It could be 1 मीटर. कोई भी ऐसा फिक्स क्राइटेरिया नहीं है कि आप इतने डिस्टेंस तक यूज़ कर सकते हो. कोई भी क्लियर डेस्टिनेशन, कोई फिक्स रूल नहीं है कि कोई फिक्स क्राइटेरिया नहीं है कि इतने डिस्टेंस तक ही आप रिमोट सेंसिंग यूज़ कर सकते हो. इट कुड बी 1 मीटर, 1000 मीटर, मोर देन 1000 किलोमीटर फ्रॉम द ऑब्जेक्ट और एरिया ऑफ इंटरेस्ट. In fact, virtually all the astronomy is based on the remote sensing. The characteristics of an object can be determined using the reflected or emitted electromagnetic radiation from the object. That is, each object has unique and different characteristics of the reflection or emission depending upon the different environment condition. एनवायरमेंट कंडीशन के हिसाब से जो भी ऑब्जेक्ट है उसमें जो भी रिफ्लेक्शन और एमिशन होगा वो डिफरेंट होगा. ओके, तो वो किस पे डिपेंड करता है? एनवायरमेंटल कंडीशन पे डिपेंड करता है. रिमोट सेंसिंग इंक्लूड्स एरियल फोटोग्राफी एंड सैटेलाइट इमेजनरी. एरियल फोटोग्राफी आपने चैप्टर पढ़ा नहीं है सर्वेइंग में, पर एरियल फोटोग्राफी दैट मीन्स वो के कोई एरिया होता है, वो एरिया का हमें मैप प्रिपेयर करना है तो हमें क्या करना पड़ता है? वो एरिया का स्मॉल पार्ट करके उसको ओवरलैपिंग रहे उस तरह से उसका फोटोग्राफ एयरक्राफ्ट में कैमरा रख के वो फोटोग्राफ्स लेना होता है बाय डूइंग द ओवरलैपिंग. ओके, तो ओवरलैपिंग करने का मतलब क्या है कि पूरा एरिया का तो हम फोटोग्राफ्स कवर नहीं कर सकते. उसके लिए जो भी एरिया है उसको स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड करके ओवरलैपिंग, कोई भी ऑब्जेक्ट है वो ओवरलैपिंग पोर्शन है वो आना चाहिए फोटोग्राफ में. जिसका हम यूज़ किस में करेंगे? स्टीरियोस्कोप. जो एरियल फोटोग्रामेट्री में आता है कि स्टीरियोस्कोप का यूज़ करके आप क्या है जो भी फोटोग्राफ्स है और दो इमेजेस है उसमें आप ओवरलैपिंग कर सकते हो और आप उस पर से 3D इमेज क्रिएट कर सकते हो और 3D व्यू उसमें देख सकते हो. ओके, और उस पे से पूरा मैप आप प्रिपेयर कर सकते हो. Today, most natural resource mapping is done using the remote sensing. Aerial photography has been used to reproduce the virtually all the topographic maps such as forest maps, geological map, land use maps and soil maps. Aerial photography is used to prepare the detailed city maps. Satellite-based system can now measure the phenomena that change continuously over the time. दैट मीन्स सैटेलाइट बेस्ड सिस्टम जो होता है उसमें क्या है कि कई बार कोई ऑब्जेक्ट है उसमें कंटिन्यूसली और कोई एरिया है उसमें कंटिन्यूसली चेंज होता है तो वो भी रिकॉर्ड करता रहता है कि भाई इसमें इस टाइम में इतना इसमें ये चेंज आया, ये टाइम जाने के बाद इसमें ये चेंज आया, वो सब होता है. ओके, तो जो भी सैटेलाइट बेस्ड सिस्टम होता है उसमें ये होता है. देन द करंटली अवेलेबल मेथड्स फॉर द रिमोट सेंसिंग आर photogrammetry and aerial photogrammetry, thermal and multispectral scanning,
Microwave remote sensing and Earth resource satellites. First, photogrammetry and aerial photogrammetry. The photogrammetry is the process of obtaining the reliable measurements and maps photographs. Photogrammetric procedure can range from obtaining the approximate distances and elevation using the relatively simple equipment and geometric concept to precise maps and measurements using the sophisticated instruments and complex techniques. दैट मीन्स कोई मैप चाहिए मुझे, कोई भी मेजरमेंट चाहिए 3D व्यू में, तो फोटोग्रामेट्री प्रोसेस से हम ले सकते हैं. ओके, मेज़र कर सकते हैं. ओके, वो मैंने आपको आगे बताया. ऑल्दो मोस्ट एप्लीकेशंस इन्वॉल्व एरियल फोटोग्राफ्स, टेरेस्ट्रियल फोटोग्राफ्स फ्रॉम अर्थ बेस्ड कैमराज में ऑल्सो बी यूज्ड. The use of photogrammetry are preparation of the topographical map, mapping in engineering, geology, forestry, geology, etc. Thermal and multispectral scanning. Thermal scanner is used to measure the radiant temperature. What do you understand by radiant temperature? The radiant temperature of an object is measured at a distance from the object's surface. It is apparent temperature of the object. It is also called as a brightness temperature. Brightness temperature को हम क्या बोलते हैं? Radiant temperature. Devices like radiometer are used for measuring the radiant temperature of the object of Earth surface features from a distance by sensing the wavelength range up to 3 to 14 meter. The multispectral scanning enables sensing in wider range of wavelength bands from the photograph through the thermal. Then microwave remote sensing. Microwave remote sensing employ microwaves are capable of pertaining the atmosphere under the virtually all the conditions through the rain, clouds, snow, hail, smoke. That means माइक्रोवेव रिमोट सेंसिंग का यूज़ कहाँ पे होता है कि जहाँ पे बहुत रेन है, क्लाउड्स है, स्नो है, हेज है, स्मोक है, तो उस पर कोई माइक्रोवेव रिमोट सेंसिंग से कोई असर नहीं होता है. दैट मीन्स जो हमें रिज़ल्ट चाहिए वो मिलता है. मोस्ट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब हो जाती है, उसकी वजह से हमें जो रीडिंग आना चाहिए वो नहीं मिलेगा. इसमें ऐसा नहीं होता. Microwave reflection or emissions from the earth materials bear no direct relationship to their counterparts in the visible or thermal portion of the spectrum. For example, the surface that appears through in the visible portion of the spectrum may appear smooth. कई बार क्या होता है कि आप जो भी यूज़ करते हो, फॉर एग्जांपल सरफेस दैट अपीयर रफ इन द विजिबल पोर्शन. विजिबल पोर्शन में कई बार क्या होता है कि जो रफ सरफेस दिखता है, बराबर, रफ इन द विजिबल पोर्शन ऑफ द स्पेक्ट्रम में अपीयर स्मूथ एज सीन बाय द माइक्रोवेव. कई बार माइक्रोवेव में क्या है, वो स्मूथ दिखता है. थस ए markedly different view of the environment may be seen by the microwave sensing. माइक्रोवेव सेंसिंग और दूसरी टाइप की जो भी सेंसिंग है वो तो दोनों में डिफरेंस होगा. बिकॉज उसमें माइक्रोवेव सेंसिंग में क्या है, जो भी सेंसर्स यूज़ होते हैं, ओके, उसमें से जो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज निकलते हैं वो क्या है, डायरेक्टली उस पर कोई असर नहीं होगा. यानी जो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज है वो एब्जॉर्ब नहीं होगा, स्कैटर नहीं होगा. ओके, तो क्या होगा, जिस तरीके से वापस वो रेस रिटर्न होना चाहिए उस तरीके से रिटर्न होगा. ओके, दैट इज कॉल्ड माइक्रोवेव सेंसिंग. रेडार इज एन एक्टिव माइक्रोवेव सेंसर while the microwave radiometer is the passive microwave sensor. The microwave radiometer respond to the extremely low levels of the microwave energy that are naturally emitted and reflected from the Tarrant features. The microwave radiometer respond to the extremely low level of the microwave energy. माइक्रोवेव रेडियोमीटर है वो क्या यूज़ करता है, लो लेवल ऑफ द माइक्रोमीटर एनर्जी दैट आर नेचुरली एमिटेड एंड रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द टैरेंट फीचर. दैट मीन्स बहुत लो लेवल
माइक्रोवेव एनर्जी होता है उसका यूज़ होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, एमिट जो भी रेज है वो एमिट होके वापस रिफ्लेक्ट होता है, और जो भी सरफेस ऑफ अर्थ फीचर्स है वो हमें क्लियरली दिखता है. देन अर्थ रिसोर्स सैटेलाइट. In this method, space-borne sensors mounted on the satellites are used to study the Earth from the space. Space-borne sensors mounted on the satellite are used to study the Earth from space. This method is used for the weather forecasting, cropcasting, mineral exploration, pollution detection. It is used for the weather forecasting, crop forecasting, mineral exploration, pollution detection. उसमें क्या यूज़ होता है, अर्थ रिसोर्स सैटेलाइट्स. The lands in the USA and the Insta series in India are example of this kind of the remote sensing. Advantages of remote sensing. Remote sensing has the following advantages. The satellite images are permanent records, providing the useful information in various wavelengths. Large area coverage enables regional survey on a variety of the themes and identification of the large features. The next, repetitive coverage allow the monitoring of the dynamic themes like water, agriculture. जो भी प्रॉपर्टी है और जो भी रिसोर्सेस है उसका रिपीटेटिवली कवरेज होता है, अलाउज मॉनिटरिंग ऑफ द डायनेमिक थीम. कई बार क्या होता है, इस एरिया में कंस्ट्रक्शन हुआ है, ओके नहीं हुआ है, और आपको अमुक सा थोड़े टाइम के बाद देखो तो वहाँ पे कंस्ट्रक्शन हुआ है. उसी तरह से ग्रीन बेल्ट है और जो भी ट्रीज़ वगैरह है, तो ये ईयर में कितना था, और आफ्टर मैनी आवर्स वहाँ पे कितना ग्रीनरी है, ग्रीन एरिया है, दैट मीन्स ट्रीज प्लांट्स वगैरह कितना ग्रो किया है, वो सब हमें माहिती मिलेगा. डेटा इजी डेटा एक्विजिशन एट डिफरेंट स्केल्स एंड रिजोल्यूशन. से सिंगल रिमोटली सेंस्ड image can be analyzed and interpreted for different purposes and applications. जो भी सिंगल रिमोटली सेंस्ड इमेज है, इट कैन बी एनालाइज्ड एंड इंटरप्रेटेड फॉर द डिफरेंट पर्पसेस एंड एप्लीकेशन. एनेबली ऑफ द रिमोट सेंस डेटा फॉर द फास्ट प्रोसेसिंग यूजिंग द कंप्यूटर का यूज़ करके हमें क्या करना है, एनेबिलिटी ऑफ द रिमोट सेंसिंग डेटा. दैट मीन्स रिमोट सेंसिंग डेटा कैसे लेना है, तो फास्ट प्रोसेसिंग यूजिंग कंप्यूटर्स का यूज़ करके हमें करना है. The remote sensing is non-obstructive if the person is passively recording the electromagnetic energy reflected from the emitted by the phenomena of the interest. Thus, the passive remote sensing using the natural source of energy, example sun, does not disturb the energy or the area of the interest. The images are analyzed in the laboratory, thus reducing the amount of the field work. Okay. Map revision at the medium to small scale is economical faster. Contour composition can be produced from the 3 individual band images, which provide the better details of the area than a single band image or aerial photograph. Contour composite can be produced from the 3 individual band images, okay, which provide better details of the area than a single band image or aerial photograph. Floods over a large region or the forest fire can be located from the area and rescue planning can be immediately arranged. That means जहाँ पे लार्ज रीजन में फ्लड आया है और फॉरेस्ट फायर, फॉरेस्ट में आग लगी है, तो वो सब वो फोरकास्टिंग करना हो कि भाई, और वो उसके रिलेटेड कोई भी लोगों को बचाना हो, फ्लड और जो भी फॉरेस्ट फायर है उसमें लोगों को बचाना हो, तो उसके लिए जो भी ऑपरेशन होता है उसमें भी रिमोट सेंसिंग यूज़ करता है, रिमोट सेंसिंग का यूज़ करता है. The inaccessible areas like volcanic eruption, failure of the dam over time, etc. can be
covered by the remote sensing techniques to satisfy the intensity of the disaster. Okay, it is accessible areas like volcanic eruption, failure of the dam or river, etc. can be covered by the remote sensing technique to study the intensity of the disaster. The data generated by the remote sensing techniques can be used for land and plastering. Land use can be used for the land use planning, planning, forest development. The data generated by the remote sensing किस में यूज़ होता है? लैंड यूज़ प्लानिंग में, फॉरेस्ट डेवलपमेंट में, जियोलॉजिकल सर्वे में, अर्बन प्लानिंग, अर्बन देन डिजास्टर मैनेजमेंट, वो सब में रिमोट सेंसिंग यूज़ होता है. Limitation of the remote sensing. The limitation or disadvantages of the remote sensing are as follows. Expensive for the small area, particularly for one-time analysis, requires specialized training for the analysis of the images. उसके लिए specialized training चाहिए. Then next, large scale engineering maps cannot be prepared from the satellite data. जो भी लार्ज स्केल इंजीनियरिंग मैप है वो सैटेलाइट डेटा पे से नहीं हम बना सकते. ओके. Then aerial photographs are costly if the repetitive photographs are required to study the dynamic features. Okay. Then next, human beings select the most appropriate sensor to collect the data, specify the resolution of the data, calibrate the sensor, select the platform that will carry the sensor, determine when the data will be collected, specify how the data will be processed. Thus the human method produces error may be introduced. Human method produces the error may be reduced or error may be introduced. Sorry. Powerful and active remote sensing systems such as radars, lasers that emit their own EMR can be intrusive. That means disturbing the object and affect the phenomena being investigated. That means जो भी हमें इन्वेस्टिगेशन करना है उस पर डेटा पे से तो उसमें हो सकता है. ओके. तो जो भी ऑब्जेक्ट है उसको बहुत वो असर करता है. ओके. थैंक यू.